And on to our top focus at this hour. On the May 28th, when the Prime Minister of the country unveils the new Parliament building, an important historical symbol will be restored to its glory. The Sengol, which symbolized the transfer of power from the British to independent India, will be placed near the Lok Sabha Speaker's chair in the new Parliament. The Prime Minister has drawn this symbol out of obscurity and brought it out for the whole nation to see. But the sad reality is that it was banished to a museum in Prayagraj for decades, where it was callously called the golden walking stick gifted to Nehru. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma took to Twitter to launch a blistering attack on the Congress, saying the Sengol was relegated to a walking stick and was kept in a museum's corner despite Nehru's crucial role as well as the role of the Sengol. He accused the entire ecosystem of censoring the event, which glorified a Hindu ritual. As many documentary proof as you want, and that is why I kept saying what we are saying today, what we are giving as documents today, what we are reenacting there in the form of a video for you are all derived from research sources, and that is being attached there in the appendix. You will see from which source what is being derived and put in the record. The entire research background will show to you that it is not just through handshakes that power is exchanged. There are certain absolutely important binational characteristic events which happen. And C.R. Keshwan, who's a BJP leader and great-grandson of India's first Governor-General, Indian Governor-General at that matter, C. Rajagopalachari, has thanked the Prime Minister for restoring the significance of the Sengol. Many of us didn't know about this momentous, important, significant occurrence in the transfer of power with the sacred scepter, which is the Sengol. So, first, as an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks, because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion into light and also given its due place in history. Meanwhile, National Conference tried to give it a communal spin, saying that secular Nehru did the right thing by keeping the Sengol in a museum. जो सेंगोल जो है उसकी जगह जहाँ थी वहीं था। पार्लियामेंट जो है ये धर्म का स्थान नहीं है। पार्लियामेंट सेकुलर मंदिर है, सेकुलर मंदिर, जहाँ हर किस्म का आदमी वहाँ है। दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और मुल्क के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सेकुलर आदमी था, उसने साबित कर दिया कि वो एक सेकुलर इंसान है, तभी आज तक हम बचे हुए हैं। This is across to our guest. With us is Rajlakshmi Joshi, political analyst, Dushyant Nagar, political analyst, also joining us on the broadcast. Rajlakshmi Joshi, let me come to you first. You heard the National Conference spokesperson saying that the Parliament is a secular temple of democracy, and Nehru showed his secularism by not keeping the Sengol, which is, according to him, a religious symbol inside the Parliament. Your response to that statement coming in from not just the NC, but there are certain parties and certain leaders in the opposition who have expressed this sentiment. Your response, Rajlakshmi Joshi. Good afternoon, Madhav. And, this is a very strange kind of an episode that is happening. And I'm glad that, at least because of the inauguration of the new Parliament building, we are now aware of a very historic, a very momentous occasion that happened when there was this transfer of power from the British to our country. So at that time, this Sengol that was handed over, it was a very symbolic gesture. This was happening not just in the Chola dynasty. This tradition was happening not just in the Chola dynasty. It was also happening with the kings of Mysore. So these kind of this symbol, what it actually meant. That whenever a king he felt that he was very powerful, etc. This Sengol, it was kind of a reminder that he is there for the welfare of the people, and that the people are watching, and that he is being watched by everybody, by the gods also, and that he should be ruling over
with responsibility. You know, that is the kind of a deep significance that this Sengol had, and Right. you know, very rightly, it was handed over with Hindu rituals. And when the Parliament building was inaugurated, the old Parliament building was inaugurated, it was all with European traditions, and it had nothing to do with Indian traditions, nothing to do with Indian culture. So at least now, you know, I'm happy that part of history, our culture, is being recognized, and All you know, right. that symbol. Yeah, is stay with us. actually Rajashri Joshi, stay with us. Let me take this question across to दुष्यंत नागर. दुष्यंत नागर, आखिरकार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक जो था हमारी आज़ादी का, और जो ब्रिटिश राज के बाद जो भारतीयों को अपने स्वराज का करने का अधिकार जिससे मिला, एक तरीके से जो ये सेंगोल है, नेहरू जी ने उसे स्वीकार किया था. और अगर ऐसा है तो इसे क्यों एक जगह में, एक संग्रहालय में वॉकिंग स्टिक के नाम से एक जगह पे रखा गया? उसको आखिर अपनी जगह क्यों नहीं दी गई? उसकी महत्वपूर्णता अभी तक पता क्यों नहीं थी लोगों को? ये सवाल उठ रहा है. और जब ये किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, तो इसका विरोध क्यों? देखिए, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया होगा. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब लॉर्ड माउंटेनबैटन ने नेहरू जी को सेंगोल, जिसे हमारे नॉर्थ इंडिया में राजदंड कहते हैं, राजदंड प्रदान किया और भावी राज व्यवस्था चलाने के लिए उनको अधिकार दिए, तब प्रधानमंत्री ही भारत के राष्ट्र प्रमुख थे. तब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था. भारत का संविधान लागू होने के बाद में हमारे राष्ट्रपति ही राष्ट्र प्रमुख हैं और राष्ट्रपति ही राजा के स्थान पर बैठते हैं. सेंगोल अर्थात राजदंड को धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राजा को है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रधानमंत्री राजदंड को धारण नहीं करता और ना उनको राजदंड धारण करने का अधिकार होता है. तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक वर्ग को, वोटर को लुभाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इसको एक इवेंट बनाना चाहती है. कर्नाटक की हार के बाद में जो लोकप्रियता मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की देश भर में घटी है, उसको, उस स्थिति को परिवर्तित करना चाह रही है. ये ठीक नहीं दुष्यंत है. नागर, अगर आपकी बात हम माने भी, अगर हम आपकी बात एक मिनट के लिए मैं मानूं भी, उस पर और भी डिबेट्स है और भी सवाल है जो भी राजश्री जोशी जी से भी पूछूंगा मैं, लेकिन अगर आपकी बात को मैं मान भी लूं, तो अगर राष्ट्रपति को भी अधिकार हो तो इस राजदंड को रखने का या सेंगोल को रखने का, तो वहां क्यों नहीं उसको रिस्टोर किया गया? एक संग्रहालय के कोने में वॉकिंग स्टिक के दर्जे पे क्यों उसको बिल्कुल किया आपने गया? सही सर, कहा. जब जिस वक्त की ये घटना है 15 अगस्त 1947 की, तब हमारा संविधान नहीं था, राष्ट्रपति का पद भारत में नहीं था. तब नेहरू जी ने सही फैसला किया. अगर आज मोदी जी से लगाना चाहते हैं तो इसको राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में लगाना चाहिए. राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय ही इसका उचित. लेकिन इनका सवाल ये है कि इसलिए उसको नकारा गया क्योंकि एक हिंदू फेस्टिवल, एक हिंदू रिचुअल को दर्शाता है. ये सवाल हिमांता बिश्व शर्मा भी उठा रहे हैं. मंदिर है और हमारे संविधान के तहत लोकसभा, राज्यसभा चलती है, संसद चलती है, जो कि एक पंथ निरपेक्ष संस्थान है. ओके, और उसे पंथ निरपेक्ष बने रहने देना चाहिए. It should not have any kind of mention of religion inside the parliament. That's the ultimate argument coming in from Dushyant Nagar as well. Rajakshmi Joshi, please respond. You know, I'm shocked as to how to what extent the Congress party wants to go to prove that, you know, they have nothing to do with Hinduism. And this strange obsession with anti-Hinduism, that is something that has happened right from August 1947, where we have always gone away from displaying our Indian culture, and we have always tried to portray India as a land of snake charmers rather than showing our deep, our rich culture and our rich heritage. And that is the reason why the world perceived us as a poor country, as somebody who was actually somebody who was uneducated, who had nothing of education. You know, we had a very rich tradition of Gurukuls. We had a rich tradition. Mr. Dushyant Nagar, आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया. प्लीज आप मुझे बात करने दीजिए. देखिए, मैं आपको दुष्यंत जी आपको मौका मिलेगा, उनको बोलने तो दीजिए. बात करिए. दुष्यंत जी आपको मौका मिलेगा, 1 मिनट रुक जाइए, आपको मौका मिलेगा सर, 30 सेकंड. हाँ दुष्यंत जी प्लीज इस तरह ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह प्लीज ना करें, एक एक करके बोले, सबको मौका दिया जाएगा, समय है हमारे पास. दुष्यंत नागर, हमारे पास वक्त है. राजलक्ष्मी जोशी, आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए.
We had Madhav, we had दुष्यंत जी, ये गलत बात है। इस तरह की डिबेट नहीं करेंगे हम। इस तरह डिबेट बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे को फेडर लोअर करना पड़ेगा। राजलक्ष्मी जोशी, our gurukuls, our education system, everything was shown as if, we were a very backward country with absolutely no education. When the reality was that we had a rich heritage of scientists, we had so many economists, we had so many philosophers. All of that was completely washed away, and our ideas were stolen. Everything was stolen. So all of this, there was this planned way in which our country was being portrayed in very poor light. And I am sorry to say that the Congress has contributed very strongly to the portraying India in very poor light. What was the need for them to show an anti-Hindu kind of a mentality? What would have gone wrong if the Sengol was displayed proudly as a symbol of righteousness, as a symbol of transfer of power from the British to the Indians? It was not a matter of showing Hinduism. It was a matter of showing this symbolic, showing some pride in our own culture. What was the need to दुष्यंत put it नागर, away जवाब as दीजिए। what अपने हमारी संस्कृति का भाग है, अगर ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर उसे रखा जाता तो क्या गलत था? भारत की संस्कृति पे हमें गर्व है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा भी है। गुर्जर प्रतिहारों ने 500 बरस राज किया है। दिल्ली पे तवर साम्राज्य भी कितने वर्ष तक रहा है, 300-400 बरस तक। चौहानों के इतना बड़ा हमारा, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। या तो फिर सबको समान भाव मिलना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुइज्म, तो नेहरू जी गलत है। तो आप ये कह रहे हैं नेहरू जी गलत थे कि उन्होंने स्वीकारा। अगर आप तमिल चोलास की सेंगोल स्वीकार करके नेहरू जी भी गलत थे, ये भी आपका मानना है? सुन लीजिए, आज की बात करिए ना, 47 की बात को छोड़ दीजिए। आज हम 2000 सर 47 से जुड़ा हुआ सवाल है, इसीलिए आपसे 47 का जिक्र कर रहा हूं। बोलने दीजिए भाई, बोलने नहीं देते आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, दिक्कत ये है। आपके सवाल का जवाब दूंगा। और हमारे सनातन धर्म की वैदिक सनातन जो परंपराएं हैं, उसमें प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं होता। प्रधानमंत्री मंत्रियों के समूह का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। और अगर इसको सेंगोल को आपको धारण ही करना है तो जाके द्रौपदी मुर्मू जी को दीजिए, और जो राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय वहां पे लगाइए। ये आप अपना इवेंट बनाना चाहते हैं? अरे 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं, उनको तो आप खाने की चीजें, नौकरियां तो मुहैया करा नहीं पा रहे। सेंगोल धारण करके दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े प्रतापी राजा हो गए। अरे आपके यहाँ पे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नोटबंदी बार बार हो रही है, लोग परेशान है। ये प्रतापी राजा का आचरण नहीं है ये। Okay, we're coming back to the same issue you're trying to divert, but Rajlakshmi Joshi respond to that. That's an allegation of his that this is an attempt to divert from core issues. But there is also a question. There is a question that why are we going back to a certain kind of rituals which are associated with monarchy, and many would say to that extent even autocracy, because we are a democracy now. So does that really fit in to the current context of a constitutional democracy? That's a question that many are asking. Madhav, I just explained to you the symbolic meaning of this Sengol, and that actually, contrary to what these opposition leaders are saying, it actually means that the gods and the public and everybody is watching you, so you need to be working for the welfare of the people, and you should not assume that you are all powerful and that nobody is watching you and that you are not questionable. That is actually the symbolism, and that is actually the meaning of this Sengol. All right, we'll have to leave it there. We'll have to leave it there for the moment. Rajlakshmi Joshi and Dushyanth Nagar, I'd like to thank both of you for joining us with your views on the story. Certainly, of course, it's a debate that we're going to see happening for the next 72 hours until the inauguration takes place at noon on Sunday, the 28th of May. Thanks so much for joining us.